Auzubillahiminash-shaytonir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. I am your teacher of SST, and today we are going to start our lecture number 2 of week number 1. I hope you all have got the previous one and you understood all the important points of that lecture. Okay, today our unit number is 5, Taimur's invasion and Sayyid dynasty, and chapter number 4, that is Lodhi dynasty. Told you that we are reading about different dynasties, and today Lodhi dynasty is the last dynasty of Delhi Sultanate, where Delhi Sultanate ended at last. Okay, Belur Lodhi. Introduction. Belur Lodhi was chief of the Lodhi Pashtun tribe. Belur Lodhi कौन था? Chief था Lodhi Pashtun कबीले का. His occupation was selling fine breeds of horses to all, including the Sayyid dynasty of Delhi Sultanate. जी उनका फैमिली ऑक्यूपेशन ये था कि वो घोड़ों की बहुत अच्छी नस्लें होती उनको फ्रोख्त करते थे, उनको सेल करते थे. Behlul was also the founder of Lodhi dynasty. Behlul founder था Lodhi dynasty का दिल्ली सल्तनत में, which would be the last dynasty of Sultanate, जो कि last dynasty है सल्तनत की. The Sayyid Sultan Alauddin had abdicated in favor of Behlul. सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी जगह को, अपनी रिशिस्त को, अपने तख्त ताज को छोड़ दिया था इन फेवर ऑफ बहलूल, बहलूल के लिए. Who became the Sultan of Delhi Sultanate in 1450, पर जो के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया था. We will talk about achievements of Sultan Behlul. सुल्तान बहलूल ने क्या अचीव किया था? Sultan Behlul kept Delhi as his capital and from there carried a number of campaigns around 1479. 1479 में उसने बहुत ज़्यादा कंपेन्स की थी, बहुत ज़्यादा मुहिमात पर गया था और उसने बहुत ज़्यादा अपने लिए एक लैंड वहाँ पे विन की थी. ही डिफीटेड, उसने शिकस्त दी एंड अनेक्स्ड. अनेक्स का मतलब होता है मिला लेना, साथ एडजस्टेंट कर लेना. And annexed the areas under the Jaunpur Empire. He was to a great extent successful in stopping rebellion and uprisings in his territories and thus extended his rule. जी उसने तमाम के तमाम बगावत को, रेबिलियन को ख़त्म किया और उसने अपने लिए बहुत बड़े इलाके में हुकूमत को. डेथ ऑफ बहलूल. देन वी विल टॉक अबाउट कि बहलूल की डेथ कैसे हुई थी. In 1486 he appointed his son Babrak Shah as viceroy of newly annexed Jaunpur. This became a problem. ये एक मसला बन गया. क्यों? As Behlul's second son Sikandar Lodi was appointed successor. सिकंदर लोधी जो उसका दूसरा बेटा था उसको अपॉइंट कर दिया गया सक्सेसर जानशीन के तौर पर, बाद में आने वाले के तौर पर. So after Behlul's death in 1489, a power struggle started between two brothers. दोनों भाइयों के दरमियान पावर, एक जंग जीतने की, एक अथॉरिटी लेने की जंग शुरू हो गई और ये जंग मज़ीद आगे चलती रही. Now we will talk about Sikandar Lodi. Our topic is Sikandar Lodi. I will give you introduction. He reigned as Sultan of Delhi from 1489 to 1571. जी उसने हुकूमत की थी 1489 से लेकर 1570 तक, 17 तक. He was son of Sultan Behlul. वो सुल्तान बहलूल का बेटा था and was the second एंड द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी. दूसरा और बहुत ही कामयाब तरीन लोधी डायनेस्टी का रूलर था. कॉन्केस्ट ऑफ सिकंदर लोधी. जी सिकंदर लोधी ने क्या क्या फतह किया था? ही वॉज अ पोइट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज. वो उसने क्या किया था? ही वॉज अ पोइट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज. वो पर्शियन फारसी ज़ुबान का शायर था एंड हैड रिटन अ कलेक्शन ऑफ 9000 पोइटिक वर्सेस. और उसने 9000 पोइटिक वर्सेस लिखी थी, मतलब इशार लिखे थे. Then he demonstrated ample evidence of his qualities as a general, as an administrator, and as a consolidator of the Sultanate. जी वो सल्तनत को मुस्तहकम करने वाला था, उसको मजबूती देने वाला था. वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर था और जनरल के तौर पर भी काम करता रहा. He defeated his elder brother. उसने अपने बड़े भाई को शिकस्त दी and brought जौनपुर under his direct control. और जौनपुर को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेकर आ गया. He conquered Bihar, Dholpur, Bidar, and many Afro kingdoms. His empire extended from Punjab to Bengal. He was capable ruler and encouraged trade. Trade को बहुत ज़्यादा उसने
मतलब इनकरेज किया, हौसला अफजाई की। He discriminated against Hindu subject as he had a reputation for religious intolerance. वो मज़हब के बारे में कोई बुरी बात बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए वो तमाम किस्म की बुरी बातों को जो मज़हब से रिलेटेड होती थी उनकी उनकी बहुत सख्त पनिशमेंट दिया करता था। He was a great conqueror and administrator. वो एक बहुत ही अजीम conqueror था, फतह करने वाला था और मुंतजिम था। Okay, death of Sikandar Lodi. He died in 1517, thus ending the last stable period of the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी सबसे मुस्तहकम मजबूत किस्म का जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया जैसे ही सिकंदर लोधी की डेथ। My dear students, now we will do question number 7 and question number 9 of this chapter. Question number 7. How did Behlul Lodi come to power? How was Sultan Behlul an effective leader? Sayyid Sultan. Answer is Sayyid Sultan Alauddin had abdicated in favor of Behlul Lodi, who became the Sultan of Delhi Sultanate in 1451. He kept Delhi as his capital and from there carried a number of campaigns. He extended his rule in many new areas. He was a wise king. And the question number 9 is who was Sikandar Lodi? What did he do when he came to power? He was the second and the most successful ruler of Lodi dynasty of Delhi Sultanate. He was also a poet of Persian language. The first thing he had to do was to defeat his elder brother and bring Jaunpur under his direct control. He conquered the states of nearby kingdom. He was a capable ruler and he encouraged trade. All the questions and you have noted down on in your notebook. Now your homework is that you have to learn question number 7 and 9 of chapter 4 and do reading also of this chapter. Note these two questions on your notebook and then revise it. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.